Hello guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on clinical pharmacy. So today we will discuss about the level of action of clinical pharmacist and the activities of clinical pharmacist. For my previous videos on clinical pharmacy, you can check the link in the description box. You can click on the I button also. Let's talk about the level of action of clinical pharmacist. So basically, clinical pharmacist activities may influence the correct use of medicines at three different levels: before the medication, during the medication, and after the prescription is written. So let's talk about first one, that is before the prescription. So before the prescriptions, you have to take care of the clinical trials, then the formularies, then drug information and drug related policies you have to make before giving any prescriptions to the patient. Then during the prescription you have to do the counseling activity, then you have to do some clinical pharmacist can influence the attitudes and the priorities of the prescriber in their choice of correct treatment. Then the clinical pharmacist monitor, detect and prevent the medication related problems. The clinical pharmacist pays special attention to the doses of the drug which need therapeutic monitoring. Then community pharmacists can also make prescription decisions directly when over the counter drugs are counseled. So जब भी प्रिस्क्रिप्शन की बात की जाती है तो उस समय क्या होता है कि काउंसलिंग एक्टिविटी की जाती है. किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देते टाइम पे यू हैव टू काउंसिल दैट पर्टिकुलर पेशेंट. तो इससे क्या होगा कि करेक्ट ट्रीटमेंट जो रहता है वो पेशेंट को मिल सकता है और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स रहती है रिलेटेड टू द मेडिकेशन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं टुवर्ड्स हिज डोसेज रेजिमेन. तो मेडिकेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें अनट्रीटेड इंडिकेशंस हो सकते हैं, इम्प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन हो सकता है, सब थेरेपेटिक डोसेज फॉर्म हो सकता है जिसमें कि थेरेपेटिक इफेक्ट जो रहता है वो प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता है. देन मेडिकेशन फेलियर टू रिसीव, देन मेडिकेशन ओवरडोज होने के चांसेस हो सकते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, ड्रग इंटरेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं. देन मेडिकेशन यूज विदाउट इंडिकेशन. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है अगर उनकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की जाती है पेशेंट की. तो then after the prescription you have to again counsel the patient that how you will take the medication, then preparation of the personalized formulation, then drug use evaluation, then outcome research, then pharmacoeconomical studies. So after the prescription you have to counsel the patient कि उसको किस टाइम पे मेडिकेशन लेनी है, कितने डोसेज में लेनी है, कहाँ पर उसको स्टोर करके रखना है, ये सारी काउंसलेशन आपको करनी होती है. देन अगर किसी भी पेशेंट के लिए कुछ पर्सनलाइज फॉर्मुलेशन बनाना है या प्रिस्क्राइब किया गया है तो वो फॉर्मुलेशन बनाना, देन ड्रग का एवेल्युएशन करना, देन क्या आउटकम निकल रहे हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट क्या मिल रहा है तो वो नोट डाउन करना. देन वो फार्माकोलॉजिकली तो ठीक है बट इकोनॉमिकली भी उस पेशेंट के लिए सही कि नहीं वो चीज़ को स्टडी करना. सो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर आफ्टर द prescription. Then let's talk about the activities of clinical pharmacists. So the principal activities of clinical pharmacists include the consulting, selection of the drug and drug information. So consulting is basically the analyzing to analyze the therapies, advising healthcare practitioner on the correctness of the drug therapy and providing pharmaceutical care to the patient both at hospital and at the community level. तो हॉस्पिटल और कम्युनिटी लेवल पे पेशेंट को करेक्ट ड्रग थेरेपी मिल रही है कि नहीं मिल रही है और उसको करेक्ट फार्मास्यूटिकल केयर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस चीज़ को ध्यान एनालाइज करना, दैट इज़ द कंसल्टिंग. Then selection of the drug, basically defining the drug formularies or limited list of the drug in collaboration with the hospital doctor, general practitioner and the decision maker. So with the help of general practitioner and a doctor and decision makers, you have to select the drug for the particular patient. Then let's talk about the drug information. So that is seeking information and critically evaluating scientific literature, organizing information services for both the healthcare practitioner and the patient. So you have to do the basic evaluation of the scientific literature, then you have to organize the information services for both the healthcare practitioner and the patient. So these are the activities you have to perform. Then next include the medication review.
So you have to review the medication chart and the medication history. Then attending rounds, so you have to do the rounds, मतलब प्रॉपर राउंड करना रहता है आप लोगों को. जब भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ये रोल रहता है कि उनको 2 टाइम्स तो विजिट करना ही रहता है सारे वार्ड्स को. तो उन वार्ड्स में आपको एक जो राउंड रहता है वो आप कर सकते हो मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ में, डॉक्टर के साथ में राउंड ले सकते हो. दूसरा राउंड आप खुद से जब भी चाहते हो तब ले सकते हो. तो 2 राउंड तो दिन में आपको लेने ही होते हैं. Then drug use study and the research. So drug use study is epidemiology, outcome research, pharmacovigilance and vigilance in medical devices, collecting data on drug therapy, their cost and the patient outcome through structured and scientific method. So you have to do the proper study and the research on the basis of pharmacovigilance and vigilance in medical devices. So you have to collect all the data regarding the drug therapies and you have to provide the information to the patient. Then next is the pharmacokinetic and therapeutic drug monitoring. So this you have to study to optimize the dosage regimen. Then next is the clinical trial. So you have to do the proper planning, evaluation and participating in the clinical trial. So these are the activities performed by the clinical pharmacist. Then next is the pharmacoeconomy. So using the result of the clinical trials and the outcome study to determine the cost effectiveness evaluation. So pharmacologically भी वो effective हो plus कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए ताकि कि पेशेंट जो रहे वो इजीली उन ड्रग्स को ले सके, उन मेडिकेशन को ले सके, जैसे कि उसको प्रॉपर जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो मिल सके. फार्माको इकोनॉमी होनी चाहिए मेडिकेशन. दैन टीचिंग एंड ट्रेनिंग. सो यू प्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड एक्टिविटीज़ टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर. सो बेसिकली जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है तो वो एजुकेशन प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करता है, जिसकी वजह से वो मेडिकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे फार्मासिस्ट को या अदर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड कर सकता है. दैन जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं मेडिकेशन से रिलेटेड या पेशेंट से रिलेटेड वो आपको मेडिकल रिकॉर्ड में मिलते हैं. पेशेंट से यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन, दैन उसकी फैमिली से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. दैन हेल्थ केयर टीम रहती है जो कि अगर उस पेशेंट के कॉन्टैक्ट में होगी तो उससे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. तो मेडिकल रिकॉर्ड में आपके आते हैं एडमिशन इन्फॉर्मेशन, इनिशियल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, प्रोग्रेस नोट्स, कंसल्टेशन, नर्सिंग नोट्स, लेबोरेटरी डेटा, diagnostic procedures, radiology, surgery, medication order, then medication administration order, then consent form. So these are the medical record. And then the clinical pharmacy practice area are the where you have to do your practice. That is, you can practice at the ambulatory care, in critical care, drug information सेंटर पे आप काम कर सकते हो. दैन जियाट्रिक एंड लॉन्ग टर्म केयर में काम कर सकते हो. दैन इंटरनल मेडिसिन एंड द सब स्पेशलिस्ट, दैन कार्डियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इन्फेक्शियस डिसीजेज, न्यूरोलॉजी, दैन नेफ्रोलॉजी, obstetric and gynecology, pulmonary diseases, psychiatry, rheumatology, nuclear pharmacy, nutrition, pediatric, pharmacokinetic, surgery. So these are the fields where you can practice. Then जो practice guidelines होती है for the pharmacotherapy specialist, तो क्या होती है? The pharmacotherapy specialist design, implement, monitor, evaluate and modify the patient pharmacotherapy to ensure effective, safe and economical patient care. Then the pharmacotherapy specialist retrieves, analyzes, evaluates and interprets the scientific literature as a means of providing patient and population scientific drug information to health professional and the patient. Then the pharmacotherapy specialists participate in the generation of a new knowledge relevant to the practice of the pharmacotherapy, clinical pharmacy and the medicine. Then the pharmacotherapy specialists educate the healthcare professional and the student, patient and the public regarding the rational drug therapy. Then the pharmacotherapy specialist continually develop his or her knowledge and skill in applicable practice area and demonstrate a commitment to continued professional growth by engaging in a lifelong processes. So बेसिकली जो प्रैक्टिस गाइडलाइंस होती है फार्माकोथेरेपी स्पेशलिस्ट की, उसमें क्या होता है कि वो फार्माकोथेरेपी को डिज़ाइन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, एवेलुएट करते हैं और पेशेंट के अकॉर्डिंग वो जो फार्माकोथेरेपी रहती है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि कि पेशेंट को इफ़ेक्टिव, सेफ, इकोनॉमिकल पेशेंट केयर मिल सके.
और वो जो फार्माकोथेरेपी स्पेशलिस्ट होते हैं, दे कैन रिट्राइव, एनालाइज, इवेलुएट एंड इंटरप्रिटेट द साइंटिफिक लिटरेचर एज अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग पेशेंट एंड पॉपुलेशन स्पेसिफिक ड्रग इंफॉर्मेशन to healthcare professional and the patient. Then they can participate in generating the new knowledge relevant to the practice of the pharmacotherapy, clinical pharmacy and the medicine. Then they can educate the healthcare professional and student, patient and the public regarding the rational drug therapy. So rational drug therapy basically means at what time you have to give the medication to the patient at the right time, right dose, right formulation, ताकि कि patient को थेरेपेटिक इफेक्ट मिल सके उसका. सो ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअली दे कैन डेवलप देयर नॉलेज एंड स्किल इन एप्लीकेबल प्रैक्टिस एरिया एंड डेमोस्ट्रेट अ कमिटमेंट टू कंटिन्यू द प्रोफेशनल ग्रोथ बाय एंगेजिंग इन अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस. So how you will pursue the clinical pharmacy? So you have to do Pharma D, then master degree in the clinical pharmacy, then you have to do 3 years of training wherever you are the residents. You have to do 3 years of training for that. So after that you can pursue the clinical pharmacy. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.